erinnern Sie sich? Hier kommt Genitiv. Erinnern Sie sich an. Erinnern an ist fest. Erinnern Sie sich an die Jahre Ihrer Kindheit. Sie है तो क्या आपको अपने बचपन के ईयर्स साल याद है? तो जिस एरिनरन के साथ आन तो आएगा ही आएगा. Erinnern Sie sich an die Jahre Ihrer Kindheit? An die Jahre Ihrer, क्योंकि जी के हिसाब से यहाँ ईयर आपके. Erinnern Sie sich an die Jahre Ihrer Kindheit? Second one with du. Erinnert du. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich an das Haus An das Haus deiner Großeltern? deiner deiner Genitiv. Des, der, des, der. So here deines, deiner, deines, deiner. समझ गए क्या? ऑफ, यहां पे ऑफ का भी तो मीनिंग आ रहा है ना. फर्स्ट देखो, erinnern Sie sich an, do you remember, do you recall, क्या तुमको याद है, तुमको याद आती है. Die Jahre Ihrer Kindheit, Ihrer का मतलब है of your, of your. तो यहाँ पे भी of your ही होगा, बट ये फॉर्मल था, ये इनफॉर्मल है. of your. The Troy में, क्या तुम लोगों को तुम्हारी जवानी के ड्रीम याद हैं? कैसे बोलेंगे? कई लोग तो भूल जाते हैं पुराने. ईयर. Erinnern ihr sich die Träume? Wer kann das versuchen? Äußert Jugend. Noch einmal bitte. Erinnern ihr sich die Träume? Euch. Erinnert. Äußert. Erinnert. Ihr. Ihr. Sich. Euch. Euch. Ihr euch. Ich mich. Sie sich. So erinnert ihr euch an die Träume eurer Jugend? ईयर की भी तो टेबल है ना. ईयर की ऑयर वाली टेबल बनती है. सो युगेंड इज दी युगेंड, सो फेमिनिन ऑयरर युगेंड. यूथ, जवानी. Ja. Yunus, versuchst du das? Und dann vielleicht Raj. Du, große Liebe. क्या तुमको große Liebe, क्या तुमको तुम्हारे ड्रीम लव की अभी भी याद है? माय गॉड. ग्रोस लीवे का मतलब होता है जो आदमी को उसका ड्रीम पार्टनर मिलता है लाइफ में, सच्चा प्यार. Du erinnerst dich die große Liebe. Das beginnt man mit verb. This is a question always. Erinnerst du dich? Erinnerst du dich die große Liebe deines Lebens? Ja. Erinnerst du Dich. dich Die große an die deines an Lebens. die An die.
Every time an will be there. Jish, erinnern, an. It's fixed. Like this interessieren für. So here, erinnerst du dich an die große Liebe deines Lebens? राज सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? ट्राई करो, एक एक करोगे तो शायद. यस सर Elliot sich an der Namen ihrer Grundschülerin. Okay. Elliot sich an der Namen ihrer Grundschülerin. ओके, ये जो तीनों सही बताएगा उसको मेरे साथ बिठा के चाय पिलाऊंगा. Erinnern कर लो. Okay. Erinnert sich an der Name Okay. ihres Grundschullehrer. Grundschullehrers. ओके, Grundschullehrers का मतलब है प्राइमरी स्कूल के टीचर. क्या तुमको अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर का नाम याद है? ओके, ट्राई करो ये भी, Ihres. फिर बताऊंगा. ट्राई दिस वन ऑल्सो. कोई भी ट्राई करो. Erinnert ihr euch an der Name erinnert sich der Name eurer beste Freundin. Ihres Grundschullehrers. ओ, आपकी चाय तो गई. खैर, एरी, पहली बात तो जी का समझ लो. जी में तो हर बार एरिनरन जी जिश आएगा ना. एरिनरन जी जिश. आन den Namen होगा ये आपकी बात. क्यों होगा? an den Namen क्यों होगा बताओ? प्लूरल नहीं है. डाटिव कैसे है? आन है आपको डाटिव. नाम इज वीक नाउन, एन नोमन. वीक नाउन के केस में अगर वो वीक नाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, मतलब एज ए सब्जेक्ट तो वो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है तो उसमें एन या en लगता है. सो नाउ हियर अन den Namen, तो अन आकुजाटिव हो गया यहाँ पे, तो den Namen नहीं रह सकता, ये नामन करना पड़ेगा. सो erinnern Sie sich an den Namen, अपने उस टाइम की स्कूल जो टीचर थी उसका नाम याद है क्या? तो अगर फीमेल करना है तो an den Namen ihrer Grundschullehrerin. ओके. और अदरवाइज टीचर होता तो ईयरस और फिर एस भी लगता उधर, लेरस. यहाँ पे ईयरर लेररिन आ गया बिकॉज फेमिनिन केस है. अगर मैस्कुलिन होते, मेल टीचर होता मान लो यहाँ पे, तो ईयरस ग्रुंडशुलेरर्स, क्लार्क उधर एस लगता फिर. एंड दिस वन हियर erinnert ihr euch An den Namen. erinnert ihr euch An den Namen. an den Namen
Oisius, Bestus Freundus. Eurer और Eurus डिपेंड करता है। अगर बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे तो ऑयरस। Eurer आगे यस सर, ऑयरस बेस्ट फ्रेंड। वेस्टर्न Why? Because यहाँ पे गेनेटिव केस है, गेनेटिव के बाद में एडजेक्टिव में हमेशा en, this is fixed. So erinnert ihr euch an den Namen eurer besten Freundin और eures besten Freunds. लास्ट वन, आपको अपने A1 वाले जो जर्मन टीचर या फीमेल टीचर थी जो भी, उनका याद है क्या? टीचर नहीं, कुर्स्टाइल नेमर, जो A1 जिनके साथ आप लोगों ने पढ़ा था, उनके नाम याद है क्या? यस सर। ओके, सो Erinnerst du dich an die Erinnerst- Teilnehmer? erinnerst du Erinnerst du dich an die Kursteilnehmer an deines A1-Kurs? Teilnehmer Teilnehmer deines deines A1-Kurs. Teilnehmer deines A1 Kurses Kurses. des Kurses होगा ना? Yes. So deines Kurses. आहा, ये तो जोरदार एक्सरसाइज निकली। ओके, जे गुड।